Hey guys, subscribe to Revit app and also click on the bell icon next to the subscribe button to get notified whenever I upload a new video on my channel. So hello guys and welcome back to my YouTube channel. I recently received a product from Bolt Charger जो कि एक बाइक चार्जर है. बता देता हूँ आपको क्या है इन शॉर्ट. तो ये वाला पार्ट एक वायर है पूरा और उसके साथ एक कनेक्टर मिलता है जो कि हैंडल बार पे कनेक्ट होगा और दो वायर सेपरेट है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ये एक्चुअली चार्जर है जो इसके अंदर स्लाइड इन करना है. क्लिक आवाज आने के बाद उसको और अंदर नहीं डालना है. तो ये एक चीज़ है. उसके साथ पैकेट में था एक USB केबल, एंड्रॉयड USB केबल. अब अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपका जो नॉर्मल USB केबल है वो भी इस सॉकेट के साथ यूज़ कर सकते हो. और एक पाउच मिला है फ़ोन रखने के लिए GPS अलॉन्ग विद 4 जिप टाइज. आप देख सकते हो यहाँ पे. तो डायरेक्टली इसे बैटरी पे कनेक्ट करना है और फिर हैंडल बार तक लेना है. तो अभी कार में बैठा हूँ क्योंकि थोड़ा पेट्रोल भी भराने का था कार में और टूल बॉक्स मेरा कार के अंदर था, तो जो कि पाने स्क्रू ड्राइवर जो कुछ मुझे लगेगा अभी मैं वो सब निकालूंगा. और इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है. ये 10 नंबर का आपको सिर्फ पाना लगेगा और बैटरी के टर्मिनल्स के लिए नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर. चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है. Installation is almost done. Black wire to the black, like negative point, and red to the positive. This is the charger, and from here the wire is there. You can see the zip ties right here. The next one right here. Then the third one on the dash guard right there, and the fourth one here. The wire is still here, I mean the installation mount. Make sure you are able to tilt your handle, and as soon as you connect it you can see the red light, which means power is going on right there. That too even when the engine is off. So in case you want to use this charger, make sure that the bike is in running condition or don't connect this if the bike is not moving. I'll just remove it. Anti-theft, you can actually keep this thing in your pocket and you can leave with the mount right there. Put all these things back on the bike. So I'll show you how it works. I inserted the charger. You can see a red LED under the Bolt logo, and here is my GoPro Hero. I'll put this on charging, and you can see that the red light is on the GoPro and the red on the Bolt charger as well. If I turn it on, you can see the charging is going on. So I'm shooting this part of the video with my GoPro Hero 1080 30 frames per second.
Here is my mobile, and as you guys can see the charging logo right there, and this is the USB which came along with the board charger, the free USB cable I would say, and it's charging. So this is how you can actually mount this mobile bag or pouch on your fuel tank. पीछे का सिर्फ खींचना है और फिर सीट को प्रेस करना है, और यहाँ पे GPS सेट कर सकते हो आप, और आगे से फिर यहाँ नीचे की तरफ बकल है. The only thing which I did not liked about this pouch is that ओपनिंग नीचे से होता तो काफ़ी अच्छा होता. अभी मेरा फ़ोन मेरे को उल्टा डालना पड़ा है, बट ये देखिए उल्टा जाना पड़ रहा है. बट द पाउच इज़ एक्चुअली गुड फॉर डिवाइसेस अप टू 5.5 इंच डिस्प्ले. दैट इज़ अ गुड थिंग. बट द ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स को नीचे के साइड पे चार्जिंग स्लॉट होता है, तो डिवाइस ऐसे जाता था, और वायर इज़ सफिशिएंट इनफ even if you want to take a turn. You see right there. But anyways, the overall build quality, the plastic or the velcros are made up of good quality I would say. Looks durable. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. इंस्टॉलेशन गाइड as well as review for Bolt motorcycle charger. Purchase links are there in the description box below. If you are interested, go ahead and buy it. The overall build quality, the quality of the pouch, I would say it's good, which means normal smartphone के साथ जो चार्जर मिलता था वही स्पीड पे बैटरीज सेलफोन की या फिर GoPro की किसी की भी चार्ज कर सकते हो आप. So that's pretty much it about today's vlog. I hope to see you guys in my next vlog. Till then, this is Ravitap signing off. Ride safe and don't be a squid. Thanks for watching.